ओम श्री गणेशाय नमः। श्री महाकाल शनि मृत्युंजय स्तोत्र विनियोगः। ओम अस्य श्री महाकाल शनि मृत्युंजय स्तोत्र मंत्रस्य पिपलाद ऋषि अनुष्टुप छंदो महाकाल शनिर्देवता संबीजम मायसी शक्ति कालपुरुषायेति कीलकम मम अकाल अपमृत्यु निवारणार्थे पाठे विनियोगः। ओम महाकाल शनि मृत्युंजयाय नमः। ध्यानम नीलाद्रिशोभांचित दिव्यमूर्तिः खड्गो त्रिदंडी सरचापहस्तः शंभुर्महाकाल शनिः पुरारिर्जयत्यशेषासुरनाशकारी मेरुपृष्ठे समासीनं सामरस्ये स्थितं शिवं प्रणम्य शिरसा गौरी पृच्छति स्म जगद्धितं। पार्वत्युवाच भगवन् देवदेवेश भक्तानुग्रहकारक अल्पमृत्यु विनाशाय यत्त्वया पूर्वसूचितं तदैव त्वं महाबाहो लोकानां हितकारकं तव मूर्तिप्रभेदस्य महाकालस्य साम्प्रतं शनेर्मृत्युञ्जय स्तोत्रं ब्रूहि मे नेत्रजन्मनः अकालमृत्युहरणम् अपमृत्युनिवारणं शनिमन्त्रप्रभेदाये तैर्युक्तं यतस्त्वयं शुभं प्रतिनाथ चतुर्यन्तं नमोन्तं मनुनायुतं। श्री शंकर उवाच नित्ये प्रियतमे गौरी सर्वलोकहिते रते गुह्याद्गुह्यतमं दिव्यं सर्वलोकोपकारकं शनि मृत्युंजय स्तोत्रं प्रवक्ष्यामि तवधुना सर्वमंगलमांगल्यं सर्वशत्रुविमर्दनं सर्वरोगप्रशमनं सर्वापद्विनिवारणं शरीरारोग्यकरणं आयुर्वृद्धिकरं नृणां यदि भक्तासि मे गौरी गोपनीयं प्रयत्नतः गोपितं सर्वतन्त्रेषु त्रक्षणीस्व महेश्वरी। ऋषिन्यासं करन्यासं देहन्यासं समाचरेत् महोग्रं मूर्ध्नि विन्यस्य मुखे वैवस्वतं न्यसेत् गले तु विन्यसेन् मन्दं बाहोर्महाग्रहं न्यसेत् गृही न्यसेत् महाकालं गुह्ये कृशतनुं न्यसेत् जान्वो तूडूचरं न्यस्य पादयोस्तु शनैश्चरम् एवं न्यासविधि कृत्वा पश्चात् कालात्मनः शने न्यासं ध्यानं प्रवक्ष्यामि तनो स्वार्या पठेन्नरः कल्पादियुगभेदाश्च क्राङ्गन्यासरूपिणः। नीलाद्रिशोभाञ्चितदिव्यमूर्तिः खड्गो त्रिदण्डी सरचापहस्तः शंभुर्महाकाल शनिः पुरारिर्जयत्यशेषासुरनाशकारी मेरुपृष्ठे समासीनं सामरस्ये स्थितं शिवं प्रणम्य शिरसा गौरी पृच्छति स्म जगद्धितं। पार्वत्युवाच भगवन् देवदेवेश भक्तानुग्रहकारक अल्पमृत्यु विनाशाय यत्त्वया पूर्वसूचितं तदैव त्वं महाबाहो लोकानां हितकारकं तव मूर्तिप्रभेदस्य महाकालस्य साम्प्रतं शनेर्मृत्युञ्जय स्तोत्रं ब्रूहि मे नेत्रजन्मनः अकालमृत्युहरणम् अपमृत्युनिवारणं शनिमन्त्रप्रभेदाये तैर्युक्तं यतस्त्वयं शुभं प्रतिनाथ चतुर्यन्तं नमोन्तं मनुनायुतं। श्री शंकर उवाच
नित्ये प्रियतमे गौरी सर्वलोकहिते रते गुह्याद्गुह्यतमं दिव्यं सर्वलोकोपकारकं शनिमृत्युञ्जय स्तोत्रं प्रवक्ष्यामि तवधुना सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वशत्रुविमर्दनं सर्वरोगप्रशमनं सर्वापद्विनिवारणं शरीरारोग्यकरणं आयुर्वृद्धिकरं नृणां यदि भक्तासि मे गौरी गोपनीयं प्रयत्नतः गोपितं सर्वतन्त्रेषु त्रच्छृणुष्व महेश्वरी ऋषिन्यासं करन्यासं देहन्यासं समाचरेत् महोग्रं मूर्ध्नि विन्यस्य मुखे वैवस्वतं न्यसेत् गले तु विन्यसेन् मन्दं बाहोर्महाग्रहं न्यसेत् गृही न्यसेत् महाकालं गुह्ये कृशतनुं न्यसेत् जान्वो तूडूचरं न्यस्य पादयोस्तु शनैश्चरम् एवं न्यासविधिं कृत्वा पश्चात् कालात्मनः शने न्यासं ध्यानं प्रवक्ष्यामि तनोस्वार्या पठेन्नरः कल्पादियुगभेदाश्च क्राङ्गन्यासरूपिणः नीलाद्रिशोभाञ्चितदिव्यमूर्तिः खड्गो त्रिदण्डी सरचापहस्तः शम्भुर्महाकालशनिः पुरारिर्जयत्यशेषासुरनाशकारी मेरुपृष्ठे समासीनं सामरस्ये स्थितं शिवं प्रणम्य शिरसा गौरी पृच्छति स्म जगद्धितं पार्वत्युवाच भगवन् देवदेवेश भक्तानुग्रहकारक अल्पमृत्युविनाशाय यत्त्वया पूर्वसूचितं तदैव त्वं महाबाहो लोकानां हितकारकं तव मूर्तिप्रभेदस्य महाकालस्य साम्प्रतं शनेर्मृत्युञ्जय स्तोत्रं ब्रूहि मे नेत्रजन्मनः अकालमृत्युहरणम् अपमृत्युनिवारणं शनिमन्त्रप्रभेदाये तैर्युक्तं यतस्त्वयं शुभं प्रतीनाथ चतुर्यन्तं नमोऽन्तं मनुनायुतं श्रीशङ्कर उवाच नित्ये प्रियतमे गौरी सर्वलोकहिते रते गुह्याद्गुह्यतमं दिव्यं सर्वलोकोपकारकं शनिमृत्युञ्जय स्तोत्रं प्रवक्ष्यामि तवधुना सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वशत्रुविमर्दनं सर्वरोगप्रशमनं सर्वापद्विनिवारणं शरीरारोग्यकरणं आयुर्वृद्धिकरं नृणां यदि भक्तासि मे गौरी गोपनीयं प्रयत्नतः गोपितं सर्वतन्त्रेषु त्रच्छृणुष्व महेश्वरी ऋषिन्यासं करन्यासं देहन्यासं समाचरेत् महोग्रं मूर्ध्नि विन्यस्य मुखे वैवस्वतं न्यसेत् गले तु विन्यसेन् मन्दं बाहोर्महाग्रहं न्यसेत् गृही न्यसेत् महाकालं गुह्ये कृशतनुं न्यसेत् जान्वो तूडूचरं न्यस्य पादयोस्तु शनैश्चरम् एवं न्यासविधिं कृत्वा पश्चात् कालात्मनः शने न्यासं ध्यानं प्रवक्ष्यामि तनोस्वार्या पठेन्नरः कल्पादियुगभेदाश्च क्राङ्गन्यासरूपिणः नीलाद्रिशोभाञ्चितदिव्यमूर्तिः खड्गो त्रिदण्डी सरचापहस्तः शम्भुर्महाकालशनिः पुरारिर्जयत्यशेषासुरनाशकारी मेरुपृष्ठे समासीनं सामरस्ये स्थितं शिवं प्रणम्य शिरसा गौरी पृच्छति स्म जगद्धितं पार्वत्युवाच
भगवन् देवदेवेश भक्तानुग्रहकारक अल्पमृत्युविनाशाय यत्त्वया पूर्वसूचितं तदैव त्वं महाबाहो लोकानां हितकारकं तव मूर्तिप्रभेदस्य महाकालस्य साम्प्रतं शनैर्मृत्युञ्जय स्तोत्रं ब्रूहि मे नेत्रजन्मनः अकालमृत्युहरणम् अपमृत्युनिवारणं शनिमन्त्रप्रभेदाये तैर्युक्तं यतस्त्वयं शुभं प्रतिनाथ चतुर्यन्तं नमोऽन्तं मनुनायुतं। श्रीशङ्कर उवाच नित्ये प्रियतमे गौरी सर्वलोकहिते रते गुह्याद्गुह्यतमं दिव्यं सर्वलोकोपकारकं शनिमृत्युञ्जय स्तोत्रं प्रवक्ष्यामि तवधुना सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वशत्रुविमर्दनं सर्वरोगप्रशमनं सर्वापद्विनिवारणं शरीरारोग्यकरणं आयुर्वृद्धिकरं नृणां यदि भक्तासि मे गौरी गोपनीयं प्रयत्नतः गोपितं सर्वतन्त्रेषु त्रच्छणिस्व महेश्वरी ऋषिन्यासं करन्यासं देहन्यासं समाचरेत् महोग्रं मूर्ध्नि विन्यस्य मुखे वैवस्वतं न्यसेत् गले तु विन्यसेन् मन्दं बाहोर्महाग्रहं न्यसेत् गृही न्यसेत् महाकालं गुह्ये कृशतनुं न्यसेत् जान्वो तूडूचरं न्यस्य पादयोस्तु शनैश्चरम् एवं न्यासविधिं कृत्वा पश्चात् कालात्मनः शने न्यासं ध्यानं प्रवक्ष्यामि तनो स्वार्या पठेन्नरः कल्पादियुगभेदाश्च क्राङ्गन्यासरूपिणः। नीलाद्रिशोभाञ्चितदिव्यमूर्तिः खड्गो त्रिदण्डी सरचापहस्तः शम्भुर्महाकालशनिः पुरारिर्जयत्यशेषासुरनाशकारी मेरुपृष्ठे समासीनं सामरस्ये स्थितं शिवं प्रणम्य शिरसा गौरी पृच्छति स्म जगद्धितं। पार्वत्युवाच भगवन् देवदेवेश भक्तानुग्रहकारक अल्पमृत्युविनाशाय यत्त्वया पूर्वसूचितं तदैव त्वं महाबाहो लोकानां हितकारकं तव मूर्तिप्रभेदस्य महाकालस्य साम्प्रतं शनैर्मृत्युञ्जय स्तोत्रं ब्रूहि मे नेत्रजन्मनः अकालमृत्युहरणम् अपमृत्युनिवारणं शनिमन्त्रप्रभेदाये तैर्युक्तं यतस्त्वयं शुभं प्रतिनाथ चतुर्यन्तं नमोऽन्तं मनुनायुतं। श्रीशङ्कर उवाच नित्ये प्रियतमे गौरी सर्वलोकहिते रते गुह्याद्गुह्यतमं दिव्यं सर्वलोकोपकारकं शनिमृत्युञ्जय स्तोत्रं प्रवक्ष्यामि तवधुना सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वशत्रुविमर्दनं सर्वरोगप्रशमनं सर्वापद्विनिवारणं शरीरारोग्यकरणं आयुर्वृद्धिकरं नृणां यदि भक्तासि मे गौरी गोपनीयं प्रयत्नतः गोपितं सर्वतन्त्रेषु त्रच्छणिस्व महेश्वरी ऋषिन्यासं करन्यासं देहन्यासं समाचरेत् महोग्रं मूर्ध्नि विन्यस्य मुखे वैवस्वतं न्यसेत् गले तु विन्यसेन् मन्दं बाहोर्महाग्रहं न्यसेत् गृही न्यसेत् महाकालं गुह्ये कृशतनुं न्यसेत् जान्वो तूडूचरं न्यस्य पादयोस्तु शनैश्चरम्
एवं न्यासविधि कृत्वा पश्चात् कालात्मनः शने न्यासं ध्यानं प्रवक्ष्यामि तनोस्वार्या पठेन्नरः कल्पादियुगभेदाश्च क्राङ्गन्यासरूपिणः। नीलाद्रिशोभाञ्चितदिव्यमूर्तिः खड्गो त्रिदण्डी सरचापहस्तः शम्भुर्महाकालशनिः पुरारिर्जयत्यशेषासुरनाशकारी मेरुपृष्ठे समासीनं सामरस्ये स्थितं शिवं प्रणम्य शिरसा गौरी पृच्छति स्म जगद्धितं। पार्वत्युवाच भगवन् देवदेवेश भक्तानुग्रहकारक अल्पमृत्युविनाशाय यत्त्वया पूर्वसूचितं तदेव त्वं महाबाहो लोकानां हितकारकं तव मूर्तिप्रभेदस्य महाकालस्य साम्प्रतं शनेर्मृत्युञ्जय स्तोत्रं ब्रूहि मे नेत्रजन्मनः अकालमृत्युहरणम् अपमृत्युनिवारणं शनिमन्त्रप्रभेदाये तैर्युक्तं यतस्त्वयं शुभं प्रतिनाथ चतुर्यन्तं नमोऽन्तं मनुनायुतं। श्रीशङ्कर उवाच नित्ये प्रियतमे गौरी सर्वलोकहिते रते गुह्याद्गुह्यतमं दिव्यं सर्वलोकोपकारकं शनिमृत्युञ्जय स्तोत्रं प्रवक्ष्यामि तवधुना सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वशत्रुविमर्दनं सर्वरोगप्रशमनं सर्वापद्विनिवारणं शरीरारोग्यकरणम् आयुर्वृद्धिकरं नृणां यदि भक्तासि मे गौरी गोपनीयं प्रयत्नतः गोपितं सर्वतन्त्रेषु त्रक्षणीस्व महेश्वरी। ऋषिन्यासं करन्यासं देहन्यासं समाचरेत् महोग्रं मूर्ध्नि विन्यस्य मुखे वैवस्वतं न्यसेत् गले तु विन्यसेन् मन्दं बाहोर्महाग्रहं न्यसेत् गृही न्यसेत् महाकालं गुह्ये कृशतनुं न्यसेत् जान्वो तूडूचरं न्यस्य पादयोस्तु शनैश्चरम् एवं न्यासविधि कृत्वा पश्चात् कालात्मनः शने न्यासं ध्यानं प्रवक्ष्यामि तनोस्वार्या पठेन्नरः कल्पादियुगभेदाश्च क्राङ्गन्यासरूपिणः। नीलाद्रिशोभाञ्चितदिव्यमूर्तिः खड्गो त्रिदण्डी सरचापहस्तः शम्भुर्महाकालशनिः पुरारिर्जयत्यशेषासुरनाशकारी मेरुपृष्ठे समासीनं सामरस्ये स्थितं शिवं प्रणम्य शिरसा गौरी पृच्छति स्म जगद्धितं। पार्वत्युवाच भगवन् देवदेवेश भक्तानुग्रहकारक अल्पमृत्युविनाशाय यत्त्वया पूर्वसूचितं तदेव त्वं महाबाहो लोकानां हितकारकं तव मूर्तिप्रभेदस्य महाकालस्य साम्प्रतं शनेर्मृत्युञ्जय स्तोत्रं ब्रूहि मे नेत्रजन्मनः अकालमृत्युहरणम् अपमृत्युनिवारणं शनिमन्त्रप्रभेदाये तैर्युक्तं यतस्त्वयं शुभं प्रतिनाथ चतुर्यन्तं नमोऽन्तं मनुनायुतं। श्रीशङ्कर उवाच नित्ये प्रियतमे गौरी सर्वलोकहिते रते गुह्याद्गुह्यतमं दिव्यं सर्वलोकोपकारकं शनिमृत्युञ्जय स्तोत्रं प्रवक्ष्यामि तवधुना सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वशत्रुविमर्दनं
सर्वरोगप्रशमनं सर्वापद्विनिवारणं शरीरारोग्यकरणं आयुर्वृद्धिकरं नृणां यदि भक्तासि मे गौरी गोपनीयं प्रयत्नतः गोपितं सर्वतन्त्रेषु त्रक्षणीस्व महेश्वरी ऋषिन्यासं करन्यासं देहन्यासं समाचरेत् महोग्रं मूर्ध्नि विन्यस्य मुखे वैवस्वतं न्यसेत् गले तु विन्यसेन् मन्दं बाहोर्महाग्रहं न्यसेत् गृही न्यसेत् महाकालं गुह्ये कृशतनुं न्यसेत् जान्वो तूडूचरं न्यस्य पादयोस्तु शनैश्चरम् एवं न्यासविधि कृत्वा पश्चात् कालात्मनः शने न्यासं ध्यानं प्रवक्ष्यामि तनोस्वार्या पठेन्नरः कल्पादियुगभेदाश्च क्राङ्गन्यासरूपिणः नीलाद्रिशोभाञ्चितदिव्यमूर्तिः खड्गो त्रिदण्डी सरचापहस्तः शम्भुर्महाकालशनिः पुरारिर्जयत्यशेषासुरनाशकारी मेरुपृष्ठे समासीनं सामरस्ये स्थितं शिवं प्रणम्य शिरसा गौरी पृच्छति स्म जगद्धितं पार्वत्युवाच भगवन् देवदेवेश भक्तानुग्रहकारक अल्पमृत्युविनाशाय यत्त्वया पूर्वसूचितं तदेव त्वं महाबाहो लोकानां हितकारकं तव मूर्तिप्रभेदस्य महाकालस्य साम्प्रतं शनेर्मृत्युञ्जयस्तोत्रं ब्रूहि मे नेत्रजन्मनः अकालमृत्युहरणम् अपमृत्युनिवारणं शनिमन्त्रप्रभेदाये तैर्युक्तं यतस्त्वयं शुभं प्रतीनाथ चतुर्यन्तं नमोऽन्तं मनुनायुतं श्रीशङ्कर उवाच नित्ये प्रियतमे गौरी सर्वलोकहिते रते गुह्याद्गुह्यतमं दिव्यं सर्वलोकोपकारकं शनिमृत्युञ्जयस्तोत्रं प्रवक्ष्यामि तवधुना सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वशत्रुविमर्दनं सर्वरोगप्रशमनं सर्वापद्विनिवारणं शरीरारोग्यकरणं आयुर्वृद्धिकरं नृणां यदि भक्तासि मे गौरी गोपनीयं प्रयत्नतः गोपितं सर्वतन्त्रेषु त्रक्षणीस्व महेश्वरी ऋषिन्यासं करन्यासं देहन्यासं समाचरेत् महोग्रं मूर्ध्नि विन्यस्य मुखे वैवस्वतं न्यसेत् गले तु विन्यसेन् मन्दं बाहोर्महाग्रहं न्यसेत् गृही न्यसेत् महाकालं गुह्ये कृशतनुं न्यसेत् जान्वो तूडूचरं न्यस्य पादयोस्तु शनैश्चरम् एवं न्यासविधि कृत्वा पश्चात् कालात्मनः शने न्यासं ध्यानं प्रवक्ष्यामि तनोस्वार्या पठेन्नरः कल्पादियुगभेदाश्च क्राङ्गन्यासरूपिणः नीलाद्रिशोभाञ्चितदिव्यमूर्तिः खड्गो त्रिदण्डी सरचापहस्तः शम्भुर्महाकालशनिः पुरारिर्जयत्यशेषासुरनाशकारी मेरुपृष्ठे समासीनं सामरस्ये स्थितं शिवं प्रणम्य शिरसा गौरी पृच्छति स्म जगद्धितं पार्वत्युवाच भगवन् देवदेवेश भक्तानुग्रहकारक अल्पमृत्युविनाशाय यत्त्वया पूर्वसूचितं तदेव त्वं महाबाहो लोकानां हितकारकं तव मूर्तिप्रभेदस्य
महाकालस्य साम्प्रतं शनेर्मृत्युञ्जय स्तोत्रं ब्रूहि मे नेत्रजन्मनः अकालमृत्युहरणम् अपमृत्युनिवारणं शनिमन्त्रप्रभेदाये तैर्युक्तं यतस्त्वयं शुभं प्रतिनाथ चतुर्यन्तं नमोऽन्तं मनुनायुतं। श्रीशङ्कर उवाच नित्ये प्रियतमे गौरी सर्वलोकहिते रते गुह्याद्गुह्यतमं दिव्यं सर्वलोकोपकारकं शनिमृत्युञ्जय स्तोत्रं प्रवक्ष्यामि तवधुना सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वशत्रुविमर्दनं सर्वरोगप्रशमनं सर्वापद्विनिवारणं शरीरारोग्यकरणम् आयुर्वृद्धिकरं नृणां। यदि भक्तासि मे गौरी गोपनीयं प्रयत्नतः गोपितं सर्वतन्त्रेषु त्रक्षणीस्व महेश्वरी। ऋषिन्यासं करन्यासं देहन्यासं समाचरेत् महोग्रं मूर्ध्नि विन्यस्य मुखे वैवस्वतं न्यसेत् गले तु विन्यसेन मन्दं बाहोर्महाग्रहं न्यसेत् गृही न्यसेत् महाकालं गुह्ये कृशतनुं न्यसेत् जान्वो तूडूचरं न्यस्य पादयोस्तु शनैश्चरम् एवं न्यासविधि कृत्वा पश्चात् कालात्मनः शने न्यासं ध्यानं प्रवक्ष्यामि तनोस्वार्या पठेन्नरः कल्पादियुगभेदाश्च क्राङ्गन्यासरूपिणः। नीलाद्रिशोभाञ्चितदिव्यमूर्तिः खड्गो त्रिदण्डी सरचापहस्तः शम्भुर्महाकालशनिः पुरारिर्जयत्यशेषासुरनाशकारी मेरुपृष्ठे समासीनं सामरस्ये स्थितं शिवं प्रणम्य शिरसा गौरी पृच्छति स्म जगद्धितं। पार्वत्युवाच भगवन् देवदेवेश भक्तानुग्रहकारक अल्पमृत्युविनाशाय यत्त्वया पूर्वसूचितं तदेव त्वं महाबाहो लोकानां हितकारकं तव मूर्तिप्रभेदस्य महाकालस्य साम्प्रतं शनेर्मृत्युञ्जय स्तोत्रं ब्रूहि मे नेत्रजन्मनः अकालमृत्युहरणम् अपमृत्युनिवारणं शनिमन्त्रप्रभेदाये तैर्युक्तं यतस्त्वयं शुभं प्रतिनाथ चतुर्यन्तं नमोऽन्तं मनुनायुतं। श्रीशङ्कर उवाच नित्ये प्रियतमे गौरी सर्वलोकहिते रते गुह्याद्गुह्यतमं दिव्यं सर्वलोकोपकारकं शनिमृत्युञ्जय स्तोत्रं प्रवक्ष्यामि तवधुना सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वशत्रुविमर्दनं सर्वरोगप्रशमनं सर्वापद्विनिवारणं शरीरारोग्यकरणम् आयुर्वृद्धिकरं नृणां। यदि भक्तासि मे गौरी गोपनीयं प्रयत्नतः गोपितं सर्वतन्त्रेषु त्रक्षणीस्व महेश्वरी। ऋषिन्यासं करन्यासं देहन्यासं समाचरेत् महोग्रं मूर्ध्नि विन्यस्य मुखे वैवस्वतं न्यसेत् गले तु विन्यसेन मन्दं बाहोर्महाग्रहं न्यसेत् गृही न्यसेत् महाकालं गुह्ये कृशतनुं न्यसेत् जान्वो तूडूचरं न्यस्य पादयोस्तु शनैश्चरम् एवं न्यासविधि कृत्वा पश्चात् कालात्मनः शने न्यासं ध्यानं प्रवक्ष्यामि तनोस्वार्या पठेन्नरः कल्पादियुगभेदाश्च क्राङ्गन्यासरूपिणः।
नीलाद्रिशोभाञ्चितदिव्यमूर्तिः खड्गो त्रिदण्डी सरचापहस्तः शम्भुर्महाकालशनिः पुरारिर्जयत्यशेषासुरनाशकारी मेरुपृष्ठे समासीनं सामरस्ये स्थितं शिवं प्रणम्य शिरसा गौरी पृच्छति स्म जगद्धितं पार्वत्युवाच भगवन् देवदेवेश भक्तानुग्रहकारक अल्पमृत्युविनाशाय यत्त्वया पूर्वसूचितं तदेव त्वं महाबाहो लोकानां हितकारकं तव मूर्तिप्रभेदस्य महाकालस्य साम्प्रतं शनेर्मृत्युञ्जय स्तोत्रं ब्रूहि मे नेत्रजन्मनः अकालमृत्युहरणम् अपमृत्युनिवारणं शनिमन्त्रप्रभेदाये तैर्युक्तं यतस्त्वयं शुभं प्रतीनाथ चतुर्यन्तं नमोऽन्तं मनुनायुतं श्रीशङ्कर उवाच नित्ये प्रियतमे गौरी सर्वलोकहिते रते गुह्याद्गुह्यतमं दिव्यं सर्वलोकोपकारकं शनिमृत्युञ्जय स्तोत्रं प्रवक्ष्यामि तवधुना सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वशत्रुविमर्दनं सर्वरोगप्रशमनं सर्वापद्विनिवारणं शरीरारोग्यकरणम् आयुर्वृद्धिकरं नृणां यदि भक्तासि मे गौरी गोपनीयं प्रयत्नतः गोपितं सर्वतन्त्रेषु त्रक्षणिस्व महेश्वरी ऋषिन्यासं करन्यासं देहन्यासं समाचरेत् महोग्रं मूर्ध्नि विन्यस्य मुखे वैवस्वतं न्यसेत् गले तु विन्यसेन मन्दं बाहोर्महाग्रहं न्यसेत् गृही न्यसेत् महाकालं गुह्ये कृशतनुं न्यसेत् जान्वो तूडूचरं न्यस्य पादयोस्तु शनैश्चरम् एवं न्यासविधि कृत्वा पश्चात् कालात्मनः शने न्यासं ध्यानं प्रवक्ष्यामि तनोस्वार्या पठेन्नरः कल्पादियुगभेदाश्च क्राङ्गन्यासरूपिणः।